अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एंड of length L of an edge and area is equal to 27 square unit when L is equal to 3 units. So let's कर लेते हैं हम कि surface area is A, so A is directly proportional to square of length यानी L square. So A is equal to KL square. Proportionality का साइन खत्म किया, कांस्टेंट का K. अब हमें गिवन है A कितना हमारे पास 27 एंड L कितना हमारे पास 3. पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास K आ जाएगा 3. अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास आ जाएगा A is equal to 3L square. Now we have to find the value of A when T is equal to 4. So we put in equation 2, A is equal to 3 into L is 4, 4 square. So we get A is equal to 648 square units. Now, part 2, we have for A is equal to 12, we have to find L. So put in equation 2, we get 12 is equal to 3L square. By rearranging, we get L square is equal to 4, and by taking square root, we get L is equal to 2 units. So question number 1 हो चुका हमारा complete. Hopefully आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you.